वॉल्यूम इज फाइन, ठीक है, इट्स गोइंग गुड नो, ठीक है, राइट. Good afternoon all of you, nice to see you across. Good evening Yash, nice to see you. So let's see what we will do today is we'll try going on inflation. Good evening Sejal. And we will try understanding a little better. Good evening Teen Bull. चलो फिर शुरू करते हैं. तो आज की क्लास शुरू करेंगे on inflation and we will try understanding how inflation has played its own role in developing things in India. एक बात सब लोग समझ के रखो, जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो वो तो समझते ही हो, बट जो नहीं हो वो भी समझ लो. इन्फ्लेशन का मतलब प्राइस इंक्रीज नहीं होता, रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज होता है. ये सब लोग समझ के रखोगे. इन्फ्लेशन इज नॉट प्राइस इंक्रीज बट द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीज. तो अगर कोई बोलते हैं दैट इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन, इट डजंट मीन प्राइसेस आर फॉलिंग. इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन सिंपली मीन्स दैट प्राइस इंक्रीज इज नाउ बिकमिंग लेसर. तो पिछले साल अगर प्राइस 10% पे बढ़ रहा था, अब 5% पे बढ़ रहा है. एंड देन वी से दैट द इकोनॉमिक सर्वे सेज दैट देयर हैज बीन अ राइजिंग फेज ऑफ प्राइस इंक्रीज इन इंडिया अप टू अप्रैल 2022, एंड दिस राइजिंग फेज began from August 2021, and inflation breached, by inflation we mean here consumer price index combined, breached the level of 6% in January 2022 for first time. पहली बार जो ये इन्फ्लेशन ने ब्रीच किया लेवल ऑफ 6%, वो था जनवरी 2022 में, एंड दिस वाज वेयर इट स्टार्टेड बिकमिंग सीरियस फॉर इंडिया. यू नो दैट इन्फ्लेशन वाज बिकमिंग क्वाइट बैड फॉर अस, एंड देन बाय मार्च इट वाज हिटिंग 7%, it touched even 8.5% at a point of time. So it went like that. Then it held for at around 7% between April to October. And from November it started gradually coming into 6.7, 6.8%, and then 5.7% it came down by December. So this is how inflation has behaved in India. And why is inflation a problem? Because inflation hurts the poor more. Their purchasing capacity gets eroded. Inflation hurts the people living on savings more because the real interest rate goes down. Inflation hurts people in the economy who are planning to invest if it goes beyond a limit, because uncertainty gets created. So this was the reason where we were having our trouble. Then there has been divergence between CPI and WPI inflation. I'll talk to you about this a little later, but for the time being just keep it in mind that there has been divergence between CPI and WPI inflation, and that has been mainly due to difference in the relative weights of two indices, and this divergence was observed in 2021-22. WPI inflation was very high due to increased price of fuel and raw material, but there is a lagged effect on retail prices. So there are two reasons. One is relative weight of two indices are different, and I'll tell you more about weights. You give me 5 minutes, we will be talking about weights. So one is relative weights of the two indices are different, and the other is lagged effect of imported input costs on retail prices. Retail price को affect करने के लिए जो imported input costs है थोड़ा time लगाते हैं, 3 महीने 4 महीने लगते हैं, तो इसीलिए WPI जल्दी ऊपर जाता है, input price जल्दी ऊपर बढ़ जाता है, और CPI उतनी जल्दी ऊपर नहीं जाता. CPI उतनी जल्दी ऊपर नहीं जाता. तो इस पूरे जोन में हमने देखा कि WPI जो था वो 14%, 15%, 12%
ऐसा पहुंचने लग गया था बाय 2022। लेकिन इससे एक अंदाजा भी लगाया जाता है, if WPI is rising very quickly and has reached a high level, then you can expect that CPI will also rise, because WPI is the input price and gradually the price of CPI will be transferred. तो input prices output prices में transfer होंगे और overall price बढ़ेगा। तो ये खतरा हमेशा ही रहता है over the period of time। हाँ, WPI अगर घट रहा है, जो कि अभी भारत में हालत है, WPI is now below 4%, तो ये एक अच्छा हार्बिंगर है। इसका मतलब CPI भी धीरे धीरे कम होगा। सर्वे एक और पॉइंट कहते हैं दैट, और ये क्यों रिड्यूस हो रहा है मैं इस पे आऊंगा, आप थोड़ी देर रुक जाइए। आई विल टॉक टू यू एज टू व्हाई दिस गैप इज रिड्यूसिंग इन अ डिफरेंट स्लाइड। आई हैव अ डिस्कशन फॉर यू देयर। Survey says one more point that we should keep in mind. There is another thing that survey has for us. What survey has for us is, it says that developed economies had very high inflation. Developed economies very high inflation, क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी का जो टॉलरेंस लेवल है वो 3%, 2%, यहाँ रख दो, 3%, 2%, 4% है। जबकि जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं इनका इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ा जितना डेवलप्ड इकोनॉमी का, और इंडिया का इन्फ्लेशन तो और भी कंट्रोल में रहा। Indian inflation did not go beyond 8%, which was quite an achievement given that India's upper tolerance band is 6%, while inflation in US, Europe, it was touching even up to 9% at a point of time. Economic survey says that UK saw an annual price rise of 9.2%. US inflation reached its 40-year high of 9.1%. So Americans, Europeans, whose upper tolerance level is not more than 4%, were experiencing inflation at 9%. In that comparison, we were experiencing inflation at a much lesser rate. Lagged effect का मतलब होता है आशु, that कोई चीज़ अगर एक टाइम लैग, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद असर डाले। जैसे मान लो आपको किसी ने थप्पड़ मारा और आपको 2 सेकंड के बाद पता चला अच्छा थप्पड़ लगा, चोट अब महसूस हो रही है, तो ये लैग्ड इफेक्ट का असर होता है कि हर चीज़ हमें जल्दी नहीं समझ आती। तो ऐसे ही इन्फ्लेशन जो है बाहर बढ़ता है, फिर हमारे देश में बढ़ा, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े तो हमारे इंपोर्ट के प्राइस बढ़े, बट इमीडिएटली हमारे कमोडिटी के प्राइस नहीं बढ़ते, वो थोड़ा रुक के बढ़ते हैं, उसको लैग्ड इफेक्ट कहते हैं। ऑल राइट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग मी नाउ। सो this is one thing that survey highlights which is important। और एक और बात उसमें ध्यान रखने की बात यह है that this inflation they say that we have seen in India has been due to various reasons, and I am taking you into that. So the RBI's monetary policy committee took its steps to control inflation, but you know the increase in inflation, you know the increase in inflation has been due to certain factors. You know, the supply chain disruptions pushed inflation beyond RBI's tolerance limit. Pandemic led to supply chain disruptions, and what did that affect? It affected essential goods like food, medicines, industrial goods, especially raw materials to the industry. And you know, also increased price of clothes and footwear। इकोनॉमिक सर्वे बड़े क्लियर हैं, वो लोग कहते हैं कि ये जो प्राइस बढ़ा, इट वाज मेनली ड्रिवन बाय ऑयल एंड फैट्स, फ्यूल एंड लाइट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन 21-22। आप ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑयल एंड फैट्स, ट्रांसपोर्ट एंड लाइट, यू नो ये 21-22 के हिसाब से आपके लिए आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रांसपोर्ट एंड फ्यूल एंड लाइट, ये 3 कारण थे 2021-22 में प्राइस बढ़ने के। These were the 3 reasons, you know, that 21-22 the price increased, and 22-23 में फुटवेयर, क्लोथ्स, फुटवेयर एंड क्लोथ्स ये एक, फ्यूल एंड लाइट
एंड फूड एंड बेवरेजेस, ये प्राइस इंक्रीज का कारण है 22-23 में। तो ये हमें ध्यान रखना है दैट व्हेन वी लुक एट प्राइस इंक्रीज इन इंडिया, आपसे प्रीलिम्स में कभी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने ये लिख के दे दिया। अब इकोनॉमिक सर्वे ने लिख के दे दिया मतलब आपको जानना चाहिए, ऐसा वो लोग मानते हैं। सो यू कैन बी आस्क्ड दैट 21-22 फ्यूल एंड what were the three factors causing inflation? Oil and fats, transport, fuel and light. 22-23 footwear and clothes, fuel and light, food and beverages. तो ये कारण रहे हैं हमारे इन्फ्लेशन बढ़ने के। उसके अलावा क्या कारण रहे? रशिया यूक्रेन प्राइस लीडिंग टू सर्ज ऑफ क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, व्हीट, सनफ्लावर ऑयल। माइंड यू, सनफ्लावर ऑयल, इंडियाज consumption is 15% sunflower oil, and we see this sunflower oil price rising quite drastically. So that again pushed inflation in India. 15% of total oil consumption in India is sunflower oil, and that resulted in increasing the price. Then excessive heat and uneven rainfall affected farm sector. You know, uneven rainfall was excessive rainfall in some states and shortage in another. कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा बारिश हुई और कुछ स्टेट्स में बहुत कम, और उसने काफ़ी परेशान किया हमारे इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज आई टोल्ड यू, इंडियन इन्फ्लेशन पीक्ड in April 2022, then it remained stable and then moderated to 5.7% in December 2022 because of good monsoon, prompt government steps, global economic slowdown, and interest rate increasing all brought commodity prices down. Global economic slowdown से commodity price क्यों नीचे हुए? Because demand decreased. जब economy slowdown में चली गई, especially China, India, तो demand decrease करता है उससे। If economies are in a slowdown, then demand will decrease, and that also creates lesser price. All right, that also becomes an issue, that price fall happens due to that. And then of course the inflation level has come down in India. January and February we have again seen inflation in the zone of 6%, but thankfully it is not very high and within the tolerance level more or less of RBI's limit. And the monetary policy of RBI part, this story I told you in the last class on prompt government steps, including RBI's policies that they made. Now, when we look at the domestic retail inflation, you know, when we look at the domestic retail inflation, we see that the CPI based on retail inflation declined in fiscal year 22 as compared to 21. That is 21-22, it declined compared to 2021. उसका कारण है 2021 में कोविड पैंडेमिक था, सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड थे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जगह जगह बढ़ रहा था, तो इन्फ्लेशन लेवल्स थोड़े हाई थे। 21-22 में वो थोड़े नीचे आने लग गए, तो सप्लाई द हेडलाइन इन्फ्लेशन डिक्लाइंड। हेडलाइन इन्फ्लेशन इंडिया में कहते हैं CPI कंबाइंड। यू नो, हमारे यहाँ CPI रूरल मेजर किया जाता है, CPI अर्बन मेजर किया जाता है, CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और CPI कंबाइंड मेजर किया जाता है। तो जब भी मैं बोलता हूँ हेडलाइन इन्फ्लेशन, दैट इज CPI कंबाइंड। बट एज आई वाज टेलिंग यू, oil and fats, fuel and light, transport communication, we have seen inflation, and again due to supply chain disruption and Russia-Ukraine crisis. In fact, Russia-Ukraine crisis was increasing price of edible oil, it was increasing price of rare earth, it was increasing price of fuel, it was increasing price of wheat, and it was increasing price of fertilizer. अगर आपसे कोई पूछे रशिया यूक्रेन वॉर को लेके इतनी चर्चा क्यों होती है, अब सोचो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबका दाम बढ़ रहा है, तो रशिया यूक्रेन वॉर की इसलिए चर्चा होती है कि ये प्राइस बढ़ा देते हैं, हमें दुखी करते हैं।
Then of course we know that the retail inflation has been driven by food commodities and housing, textile, pharmaceutical sectors. अब एक बात और है, ये ग्लोबल स्पिल ओवर्स जो होते हैं कि जो ग्लोबल प्राइस बढ़ा उसकी वजह से इन्फ्लेशन कितना बढ़ा। अब इकोनॉमिक सर्वे अपने लास्ट पेज पे इस चैप्टर के एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता है कि अगर 1% से फूड प्राइस बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ा ग्लोबली, अ 1% इंक्रीज in inflation globally contributes to India by 1% plus 0.63%. अगर ग्लोबली 1% प्राइस बढ़ता है तो इंडिया में 0.63% और बढ़ जाता है, क्योंकि स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं। स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है? फ्यूल का प्राइस बढ़ा, फ्यूल के प्राइस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ा, इरिगेशन का कॉस्ट बढ़ा, स्टोरेज का कॉस्ट बढ़ा क्योंकि कोल्ड स्टोरेज चेन्स पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कॉस्ट बढ़ता है, और वो स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में 0.63% से इन्फ्लेशन और भी बढ़ा देता है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सर्वे फाइंड्स दैट आउट ऑफ दिस इज द स्पिल ओवर इफेक्ट ड्यू टू एनर्जी, माइनिंग एक्सेट्रा, दैट through wholesale price inflation, every 1% increase in price in global level creates a 0.63% price increase in India, out of which 0.46% is due to due to fuel inflation, and 0.17% is due to raw material like aluminium, steel, iron ore, etc. So this is the challenge we have in Indian context where we need to be careful about. Then there is another thing, that food inflation has been caused by vegetables and cereals. Vegetables में भी टमेटो बहुत ज़बरदस्त contribute कर रहा था because of crop damage and supply disruption because of COVID related lockdown. Packaging became costlier also, that increased price of tomato quite a bit. Then of course there was cereals, milk, spices that got costlier, और ये projection किया गया है कि इस साल भी मिल्क और सीरियल के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कमी नहीं आ पाएगी. Even this year, milk, cereal, etc. will not be much in control. In fact, apart from that, personal care and effects because of revival in consumer demand have also become costlier. So, food inflation was caused by this in retail inflation. अब ये दिखाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, इसमें दो बातें तुम्हें सिखाना चाहता हूँ इस टेबल से, तो एक एक करके सीखते हैं इन दो बातों को. पहली बात, the weights should be kept in mind. Food and beverages has a weight of 45.9. weight मतलब आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो जब आप कैलकुलेट करते हो इन चीज़ों के वैल्यूज़ को. So when you calculate the value of these things, what importance do you attach to it? So food and beverages 45.9% weight, और सोचो 7% का इन्फ्लेशन रहा इंडिया में उसका, playing a big role in pushing inflation in India. You know, this was an important reason of raising price levels, कि ऑलरेडी इनका वेट इतना हाई और साथ में इनके अंदर इन्फ्लेशन भी इतना हाई. और ये एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा तुम लोग देख रहे हो, ये दिमाग में रखोगे, एनुअल रिटेल इन्फ्लेशन. तो देखो फिस्कल ईयर 22 में ये नीचे था, तो 21-22 का इन्फ्लेशन कम था. फिस्कल ईयर 22 मतलब 21-22, 23 मतलब 22-23, 20 मतलब 20-21. मुझे उम्मीद है सब लोग जागृत होकर मेरी बात समझ गए होंगे, बाद में कोई तकलीफ में नहीं जाएगा. अब दूसरी बात देखो, the other important thing we need to see is a lot of weight that is put to miscellaneous 28.3, और miscellaneous में एक interesting contribution है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. और एक्चुअली ये जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है इसमें आता है डीजल और पेट्रोल का प्राइस. इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देयर इज डीजल एंड पेट्रोल प्राइस. अब पहले के डिस्कशन को याद करो, अभी जो 10 मिनट पहले कर रहा था, देखो 2021 में 21-22 में 10% इन्फ्लेशन यहाँ था, और उसके पहले 2021 में 9.9%. ये क्या साबित कर रहा है? that petrol prices were hardening up in these years, and due to that we had large supply side inflation building up in India even from 21-22 onwards. Rather,
in 22-23, due to this high base effect, now we see that the price value looks comparatively smaller at 6.4%. It is still high, diesel and petrol price increase, but comparatively smaller compared to what we had earlier. And why has it come down? Because the government has reduced excise duty, central government, and state governments have reduced VAT on it. So in the 22-23 fiscal year, central government reduced excise duty and state governments reduced VAT. So decrease in inflation of petrol and diesel due to decrease in tax rate by both center and state government. बट तुम्हें दिखाना इसलिए चाहता था क्योंकि ये छुपा रुस्तम है. हमें लगता है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, जबकि एक्चुअली ये क्या है, ये हमारा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है जो हमें नजर आता है ड्यू टू फ्यूल एंड डीजल एंड पेट्रोल. इसलिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप कोर इन्फ्लेशन की बात करते हो, when you talk about core inflation, we should not only talk about subtracting food and beverages from consumer price index, we should also, and fuels and light, we should also talk about subtracting that part of transport and communication which is due to petrol and diesel. तो effective core inflation की बात अब हो रही है इंडिया में, जिसके वजह से ये ठीक है that we are coming back on track, but we should be doing that. Core inflation का मतलब होता है that you take CPI combined minus inflation due to food and inflation due to fuel. So fuel and light में हमारे यहाँ आता है electricity and kerosene. लेकिन kerosene तो hardly यूज होता है इंडिया में. ज़्यादा बड़ा fuel क्या है? पेट्रोल एंड डीजल. और पेट्रोल एंड डीजल को हम कहाँ कैलकुलेट करते हैं? ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में. तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन के अंदर जो पेट्रोल डीजल का पार्ट है उसको काउंट किया जाए फ्यूल एंड लाइट के साथ और फूड एंड बेवरेजेस के साथ टू कैलकुलेट कोर इन्फ्लेशन इन इंडिया इन रियल टर्म्स. तो हमें पता चलेगा दैट कोर इन्फ्लेशन इन इंडिया इज नॉट दैट स्टिकी एज इट सीमिंगली लुक्स. इट इज स्टिकी and there is demand side inflation to that extent, but it is not that sticky as it otherwise looks. So I wanted you to see that actually, and hence the table. You will be given all this. The PDF link is already available. तुम ये डाउनलोड कर सकते हो, तो तुम्हें मिल जाएगा ये डाउनलोड करने को. लेकिन ये दिमाग में रखना कि वेट से एक तो अटैच पता हो. अब देखो फूड एंड बेवरेजेस में सीरियल्स के ऊपर सबसे ज्यादा वेट होता है और हाईएस्ट इन्फ्लेशन तुम्हें सीरियल्स में मिलेगा. लोग कहते हैं हे राम ये क्या हो रहा है, हाईएस्ट इन्फ्लेशन सीरियल्स में क्यों है? भाई मेरे, अगर एमएसपी दोगे हर साल 10% एक्स्ट्रा तो सीरियल इन्फ्लेशन नहीं होगा तो क्या होगा? तो वो हो रहा है हमारे देश में. वी आर इंक्रीजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाय 10 to 12% एवरी ईयर ऑन फूड एंड food grains etc, and that means cereal inflation has to pick up no matter what. So I don't see it as a very surprising thing as long as we don't realize that if I increase MSP on cereals then it will reflect in the increase in price of food grains in the market also. Now the other interesting thing here is another high increase in spices that we observed. This high increase in spices was again due to reason. It was due to shortage of rain in particular areas like Tamil Nadu where some spices are grown, and surplus rain in some areas like hills of Karnataka, Maharashtra where some other spices are grown. So weather is the main reason why spice prices went up. Another reason why spices price went up was pickup in demand as hotels, restaurants etc. opened up much faster in the post-COVID world, and the farmers had the experience of 2021 and 21-22 where the demand for spices had not been as much, but 22-23 the demand picked up. अगर तुम सोच के देखो ये 21-22 में स्पाइस का प्राइस बहुत कम था, तो फार्मर्स का एक्सपीरियंस था कि स्पाइस के प्राइसेस उतने नहीं बढ़े थे. ये अचानक बढ़ा स्पाइस का डिमांड, और चूंकि ये अचानक बढ़ा तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, साथ में वेदर वाज नॉट सपोर्टिव. सो दैट अगेन पुट अ फैक्टर that we had. Now this is from economic survey only, this table, from nowhere else. अच्छा, ऑयल एंड फैट्स में एक बात समझना, देख के लगता है कि ये कम इन्फ्लेशन है. ध्यान से सुनना मेरी बात.
इट सीम्स एज इफ ऑयल एंड फैट्स हैज अ लेस इन्फ्लेशन हियर। तो लोग कहेंगे अरे रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, आप कहते हो एडिबल ऑयल के प्राइस बढ़े, ये तो 5.4% बढ़ा। बट एक्चुअली यहाँ है असली विचित्र घटना। पिछले ही साल चूंकि रशिया यूक्रेन वॉर के बादल मंडराने लगे थे और कंट्रीज ने एक्सपोर्ट टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, साथ में इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज ने बैन लगाना शुरू कर दिया था, तो ये देखो 27.4% was the price increase, and due to this very high base effect, and this was coming after a 16% hike the last year, this looks so high. So understand, edible oil price hike has been a big factor in India, due to which prices have increased in the last couple of years. So remember again, cereals and products, oils and fats, and then sugar and confectionery, and then clothing and footwear. यही सब बातें आपको लिखवा रहा था कि ये सब हमारे मेन इन्फ्लेशन कंपोनेंट हैं, इनको थोड़ा दिमाग में रखोगे और मेजर के वेट्स याद रखोगे कि वेट्स मेजर चीज़ों के क्या हैं। मेनली अगर आपको फूड एंड बेवरेजेस का वेट याद रह जाए, और आपको फ्यूल एंड लाइट का वेट याद रह जाए, और अगर आपको मिसलेनियस का वेट याद रह जाए, ये चीज़ें कभी कभी प्रीलिम्स में उठकर चली आती हैं, तो हमें दिमाग में रहना चाहिए कि अच्छा इनके वेट्स इतने हैं। एग्जैक्टली याद मत भी रखो, ट्रेंड याद रख लो, हमारे लिए काफ़ी है। नाउ when we look at this, you know, the solution is, Vikas, I am answering your question, the solution is to make sure that we improve upon, you know, the whole performance by pre-planning our agriculture, improving the supply chain in agriculture, promoting infrastructure development in agriculture, diversifying the crops in agriculture, and then that is edible oil and all, and making sure our dependence on fuel and light goes down. क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंस कम करें, वेस्टेज कम करें, लॉन्ग ड्राइव्स को शॉर्ट बनाएं, सड़कों के पॉटहोल्स कम करें। अगर एक रो में, जहां से मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूसा रोड से, एक रो में 4 स्कूल बने हुए हैं, तो चारों स्कूल के खुलने और बंद होने का टाइम स्टैगर्ड कर दें। Open up your schools at 7:15, 7:30, 8 and 8:30, and close down your schools at 1:15, 1:30, 2 and 2:30. तो ये जो भीड़ लगती है इन जगहों पे, और ये हर शहर की कहानी है, it's a story of every city. So all that crowd that jostles in exactly that time period of school opening up and school closing down, that crowd will be then moderated, and the cars won't have to wait a lot, and the fuel wastage will be reduced. तो ऐसे सोचे तो inflation control कर सकते हैं। All right, then I take you further. एक और बात इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है that the rural urban inflation differential has now declined. The gap was high in March 2022. The gap was high in March 2022 because food inflation was high in urban areas compared to rural areas. और ये food inflation क्यों high था? Mainly because of grains, food grains and oil seeds. इन दो चीज़ों का प्राइस काफ़ी हाई था अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में कम, तो अर्बन इन्फ्लेशन ज़्यादा था, रूरल कम। अब इस साल क्या देखने को मिल रहा है कि रूरल फूड इन्फ्लेशन हाइयर है और अर्बन कम। उसके कारण है अर्बन एरियाज़ में इंपोर्टेड फूड भी आ गया, वेजिटेबल्स एंड ऑल। अर्बन एरिया में डिमांड मॉडरेटेड हो गई, और रूरल एरियाज़ में बरसात नहीं होने की वजह से या एक्सेसिव बरसात होने की वजह से ऑन सोर्स कमी हो गई, और उनके पास इंपोर्टेड फूड जल्दी नहीं पहुंचता, और इसका नतीजा ये हुआ कि रूरल एरिया के इन्फ्लेशन बढ़ गया, अर्बन का कम हो गया। एक और कारण है बेस इफेक्ट। रूरल एरियाज हैड लोअर बेस लास्ट ईयर, देयर इन्फ्लेशन लुक्स मोर। अर्बन एरियाज हैव हैड हायर बेस लास्ट ईयर, देयर इन्फ्लेशन लुक्स लो। सो दिस इज द आइडिया that we have to keep in mind. Then another thing is the domestic wholesale price index. अब wholesale price inflation जो था वो 13% तक चला गया था in fiscal year 2022. You know, the wholesale price index had touched up to 13% in fiscal year 2022. और ये wholesale price index inflation moderate होना शुरू हुआ। सरकार ने कुछ steps भी लिए। आपको इकोनॉमिक सर्वे एक बॉक्स देता है 5.1, उसमें बताता है मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन एसेंशियल फूड कमोडिटीज। तो सीरियल्स में सरकार ने
सीरियल्स में सरकार ने कुछ ऐसे दिखाए हैं. सो मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अपार्ट फ्रॉम द वंस वी डिस्कस्ड, ये सरकार के मेजर्स हैं. बॉक्स 5.1 इकोनॉमिक सर्वे. दिस इज अगेन समथिंग वेयर यू कैन यूज थिंग्स फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. इट विल हेल्प यू. दैट इज, one measure is that government has or government banned export of wheat and controlled export of rice. राइस के एक्सपोर्ट को कंट्रोल किया. ये कहा कि आपको राइस पे जो एक्सपोर्ट सब्सिडी मिलती थी वो नहीं मिलेगी. एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया 20% का राइस पे. 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी, ताकि आप ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट ना कर सको. And all 4 types of rice that was created. It was on normal rice, brown rice, milled rice, semi-milled rice, except for parboiled rice. बाकी सब पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी 20% की. और वीट के एक्सपोर्ट्स को सरकार ने शुरुआत में बिल्कुल मना कर दिया. वीट फ्लावर, आटा, तो आटा का एक्सपोर्ट बिल्कुल मना कर दिया. बाद में उन्होंने कहा हम अलाउ करेंगे, but subjected to the restrictions that has been given by the government. So wheat prices were controlled in that manner. साथ में सरकार ने यह भी कहा that there will be insurance of food security in India first and only then food exports will be allowed. Pulses के अंदर buffer stock maintain किया सरकार ने, एक वो कारण था. और import duty and domestic taxes rationalize किए. So that was the second thing done. पल्सेस के केस में 1, import duty reduced. In fact, in things like tur, it was reduced to even 0%. And second, rationalized the input tax on pulses in India. So that was the second thing that was done, making sure that you don't have to pay much. So import duty was brought down to 0% for many pulses and rationalizing the internal taxes on pulses. So rationalized internal tax on pulses. For example, agricultural infrastructure development cess लग रहा था pulses पे, उसे कम कर दिया गया, 0% कर दिया गया. एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सेस लग रहा था, तो उसे 0% कर दिया गया. So that is a good thing that we have done. So pulses inflation has been controlled in that manner. Apart from that, in pulses, buffer stock has been maintained. Buffer stock has been maintained in case of pulses. That's again a welcome change that we have done from the past. पहले हम pulses में buffer नहीं रखते थे, अब हम बफर स्टॉक रखने लगे हैं, तो वो एक अच्छी बात होने लगी है. बफर स्टॉक का मतलब होता है अलग से सरकार खरीद के पल्सेस रखती है कि सडनली अगर प्राइस बढ़ गया तो मार्केट में रिलीज किया जा सके. द पर्पस ऑफ बफर स्टॉक इज दैट गवर्नमेंट परचेजेस एंड कीप्स इट विथ इटसेल्फ, दैट इफ देयर इज अ सडन इंक्रीज इन प्राइस देन इट कैन बी केप्ट एंड देन रिलीज टू द market. Then the other thing that has been done, so that was one that has been done. Then the other thing that has been done for pulses is that the government has said now also that union territories and state governments will be provided 1.5 million tons of chana so that they can distribute it among people. So this decision was taken in September 2022. So chana was distributed among union territories and state governments up to 1.5 million tons. इंडिया में टोटल पल्स कंजम्पशन जो मंथली बेसिस पे देखा गया है इस और पूरे इंडिया में has never been more than 1 million tons and government has 1.5 million tons and government has been distributing 1.5 million tons of chana over a 6 months period, which means that government is trying to supplement what the state governments are already providing to their people. And then the other thing that they did was on edible oil. They reduced the import duty on edible oil. All right, that is the other thing that they did, edible oil. So they reduced the import duty on edible oil, reduced import duty. That was one thing that they did.
reduced agriculture infrastructure investment cess, agricultural infrastructure development cess, ये AIDC का मतलब है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, उसको कम किया एडिबल ऑयल पे, स्पेशली जो इंडिया में ज़्यादा कंज्यूम होते हैं एडिबल ऑयल, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ड्राइड सोयाबीन, इन सब पे ये चीज़ें कम करनी शुरू की ताकि ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सके सपोर्ट टू द पीपल. ऑल्सो द बेसिक ड्यूटी ऑन क्रूड पाम ऑयल वॉज रिड्यूस्ड इन इंडिया from February till September 2022, reduced because crude palm oil is again a big consumption oil in India. So crude palm oil, the basic import duty was reduced. Crude palm oil, basic import duty was reduced. So that was another thing that was done. Basic import duty was reduced on crude palm oil. अब मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ? मेंस एग्जाम में जीएस पेपर 3 में बोलेंगे हाईलाइट द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन, और हम उसके बाद वहां पर घोचू घोचू खेलेंगे क्योंकि हमने ये नहीं पढ़ रखा होगा. तो अगर हमने ये पढ़ रखा है बॉक्स 5.1 तो हमारे पास कम से कम ये 8-9 पॉइंट्स होंगे. हम इन 8-9 पॉइंट्स को हाईलाइट कर देंगे, 7-8 पॉइंट्स को, 15 वर्ड्स ईच, हमारे 120 वर्ड्स बन गए. 80-90 वर्ड्स तो मैंने ही लिख दिए हैं यहाँ पे. So sometimes that is what they do, that in your mains exam, GS paper 3, or for economics optional people or geography optional people in your optional, they'll say what are the steps taken by the government in the last 1.5 year, 2 year to control inflation. That answer comes from here, that okay, these are the points that economic survey mentions, that how inflation can be controlled. So these are the steps taken to control inflation in the context of things. Then I come again to wholesale price inflation. Wholesale price inflation went high, thankfully started moderating after May 2022 and has now come to 5% by December 22. In fact, in February 23, the number was recorded at 3.85%. So that shows quite a moderated wholesale price inflation, which is good news for future in India, because when wholesale price inflation is moderating up, gradually the pass-through will be seen in consumer price inflation, and we will see that the consumer price inflation will also come down to something like 4.5, 4%, 5% around zone by say this year, October, September, October. This is my guess, I can go wrong, but that is what I'm guessing, that around September, October this year or August end, hoping that we should have a normal monsoon or at least a decent monsoon, and food again doesn't rise in inflation. But then in that case, we should have it moderating to 4.5% inflation. Egg inflation is negative because of high base effect, less demand, Abhay Kumar, and supply chain now being restored again, due to which it is being lesser this year compared to last year. But high base effect is playing a big role in that. Then comes the next part that we should know. अब ये देखो, ये wholesale price index का weight है. इसमें भी देखो highest weight to primary articles. In the wholesale price index weight, the highest weight is to the primary articles. Primary articles को सबसे ज़्यादा weight है 22.6%. Also see, the important thing to keep in mind is that food inflation, food article plus products, this has a weight of 24.4, और इनका inflation देखो 12.3. एक और चीज़ देखो, crude petroleum and natural gas, भले ही weight तो उतना ज़्यादा नहीं है, but inflation पिछले 2 साल में देखो 56%, 57%. But किसके वजह से? Because the base was also very low, negative base effect. तो prices गिर रहे थे, normalize होने लगे. तो ये भी factors हैं. जब ये पूरा table देखोगे, clarity मिलेगी. That okay, for 2 years the prices declined. In fact, 2021, because of COVID pandemic, less demand, global decline, the crude oil prices declined drastically, and then they have picked up in the last 2 years, which means that one of the biggest causes of inflation across is due to, the high value that we see here. Then, the other factor is that the manufactured products have a weight of 64.2. अब आपके मन में एक बात आएगी कि सर manufactured का highest weight है, आपने primary articles बोला, क्योंकि manufactured product का basket बड़ा है, इसके अंदर 500 प्रोडक्ट आ जाते हैं.
तो अगर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को ब्रेक किया जाए कि इंडिविजुअल किस प्रोडक्ट का कितना वेट है, तो वो प्राइमरी आर्टिकल्स से कम हो जाएगा। दैट इज वाई वी डोंट से दैट मैन्युफैक्चर्ड हैज द हाईएस्ट रेट। हाँ, अगर ऑप्शन में प्राइमरी आर्टिकल्स के साथ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एक साथ हैं तो टिक करोगे, लेकिन अगर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एक साथ नहीं है तो टिक नहीं करोगे। दैट इज हाउ यू शुड कीप इन माइंड। सो द आइडिया वाज हियर that manufactured product price inflation again has been moderate this year. Low base effect has also been a point in picture. So in fuel and power you will see also that petrol and diesel price has been showing a high spike. तो ये कारण है कि हमारा क्यों होलसेल प्राइस इंडेक्स हाई शो करता रहा इस पूरे साल भर में, बट स्टिल इन फिस्कल ईयर 23 it is expected that the wholesale price index overall will moderate comparatively more and will leave us with some better system as compared to where it had left us earlier. Then we take it further. What has been the reason for convergence of WPI and CPI inflation? क्या कारण रहे कि WPI और CPI इन्फ्लेशन कन्वर्ज कर गया? डाइवर्जेंस के कारण मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले पिछले स्लाइड पे बता रहा था। आई वाज टेलिंग यू द रीजन ऑफ डाइवर्जेंस इन WPI एंड CPI अ लिटिल वाइल बैक। अभी मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि क्या कारण है कि कन्वर्ज कर रहे हैं ये, यू नो, इन द लास्ट फ्यू months, why they have converged. Two big reasons is what economic survey highlights. It says the reasons for convergence, one, input prices have shown a decline. और जैसा मैंने आपको बोला था, ग्लोबल इनपुट प्राइसेस गिर रहे हैं तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जल्दी गिर जाता है, लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उतनी जल्दी नहीं गिरता। आई एम जस्ट रिपीटिंग माई सेल्फ इन इंग्लिश. Global prices are falling down for inputs, so wholesale price index falls more quickly. Retail price index doesn't fall that quickly, and that is why wholesale and retail prices look together. And the second reason is service sector inflation. Service sector is in CPI, so due to service sector inflation, CPI has picked up, but service sector is not in WPI, so WPI has not picked up. Due to service sector inflation, CPI has picked up, but service sector is not included in WPI, so WPI has not picked up. तो अब अगर prelims point of view से याद रखोगे, ये दो कारण सर्वे मेंशन करते हैं. Input prices have declined and service sector has improved. So that is why the convergence has now happened between WPI and CPI inflation. Then where are we moving now with respect to inflationary expectations? What is the future of inflation in India? Which side are we going ahead? Also remember, government has taken steps of rationalizing import duty on all important inputs like plastic, steel, crude oil. Government has also put export subsidy reduction on crude oil exporters, export tax on crude oil exporters, so all on petroleum refinery product exporters, windfall tax on petroleum refinery product exporters, so that these commodities are more available within India. So that is in box 5.2. You can always go through that. So there is what they say. But उनका major crux मैंने तुम्हें बता दिया कि एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाए ताकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट्स कम हो सकें, और जितने भी इनपुट्स हैं क्रूड ऑयल के या प्लास्टिक के या स्टील के या जेम्स एंड ज्वेलरीज के, इन सब के इंपोर्ट्स जो इनपुट इंपोर्ट्स हैं उनकी कस्टम ड्यूटी कम कर दी. तो ये दो कारण रहे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में थोड़ा मॉडरेट होने लग गया. एक और कारण क्या रहा कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस मॉडरेट करने लगे. After 2021 and 21-22, we see that 22-23, the global crude oil prices have become relatively more moderate. The next thing that we see is that with RBI taking a decisive course, you know, the anchoring inflationary expectations are now flattening up. सर्वे बोलते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन को टैकल करने का. आपको ये बताने से पहले मैं एक आंसर कर दूं. स्वप्निल, आप मुझसे पूछ रहे हैं इफ द बेस ईयर इज 2011-12 देन व्हाई वी आर टेकिंग लास्ट ईयर एज बेस ईयर.
बेटा बेस ईयर 2011-12 है, लेकिन 2011-12 के हिसाब से प्राइस इंडेक्स बनता है, और जब तुम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हो तो वो ईयर ऑन ईयर होता है। तो इंडेक्स जो बनेगा इन्फ्लेशन का, CPI WPI, उसमें 2011-12 विल बी 100। अब मान लो 10% इन्फ्लेशन हुआ तो 2012-13 विल बी 110। अब उस पर 10% और इन्फ्लेशन हो गया तो 2013-14 विल बी 121। तो ऐसे इंडेक्स कैलकुलेट होगा, और उस इंडेक्स में कैसे प्राइस बढ़े ईयर ऑन ईयर, उससे इन्फ्लेशन कैलकुलेट होता है। यू कैलकुलेट बेस ईयर as the value in which you started. So 2011-12 will have the index value 100, and then how inflation picked up year after year is how you calculate by calculating inflation index value in one year compared to inflation index value in the previous year. I hope Swapnil that answers your question. All right, और ये सब concept बिल्कुल clear रखो, और दिमाग एकदम इन बातों में सही रहना चाहिए। इनके मिस्टेक्स हमें नीचे ले जाते हैं सिस्टम में। ऑलराइट, सो दीज कंसेप्ट शुड बी वेरी क्लियर दैट व्हाट इज बेस ईयर एंड व्हाट इज द यूज ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर का यूज इन्फ्लेशन को बार बार थोड़ी 11-12 से कंपेयर करते रहोगे तो सोचो फिर तो हर साल इन्फ्लेशन 20-25-30-50% पहुंच जाएगा। अगर मैं बोलूँ 2021 का प्राइस कंपेयर टू 2011-12 का प्राइस, फिर तो ये शर्ट उतर जाएगी मेरे ऊपर से। तो इसीलिए 2011-12 के प्राइस से कंपेयर नहीं करते इन्फ्लेशन, इट्स ऑलवेज ईयर ऑन ईयर। इंडेक्स इज मेड यूजिंग द प्राइस ऑफ 2011-12. All right, I hope Swapnil it clarifies. Pranav, I hope I answered your question. I already did that. Okay, let's see this. So now we say that RBI's anchoring inflationary expectation helped. How did they anchor inflationary expectation? By increasing repo rate, increasing CRR, and reducing गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेजेस। सरकार की जो सिक्योरिटी वो मार्केट से खरीदते हैं कम खरीदने लगे, तो उसका नतीजा हुआ कि लिक्विडिटी कम गई। CRR बढ़ा दिए तो उससे लिक्विडिटी कम हो गई, और रेपो रेट बढ़ा दिए उससे लिक्विडिटी कम हो गई। और जब लिक्विडिटी ऐसे कम होते देखा गया, सुनना ही ध्यान से ये बात, so when the liquidity was seen to be decreasing, then the businesses realized that RBI is serious, it is reducing inflation, so they started revising their inflationary expectations downwards. And when the businesses start revising their inflationary expectation downwards, the market will see that downward revision, because primarily the determinant of inflation is how businesses see inflation for future. And that's the point I've given you also, that business inflationary expectation came down and household inflationary expectation came down. And that was the reason that why we came down across on these things. Of course, as I said, the Monetary Policy Committee has increased CRR by 250 basis points between May and February. Apart from that, the CRR has been increased and the government security purchases have been reduced. So all that has been a factor due to which we have seen inflation coming down. फिर इकोनॉमिक सर्वे एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं दैट इन्फ्लेशन कंपैरिजन, what is today's inflation compared to 1970s inflation? What is today's inflation compared to 1970s inflation? और इसके कुछ कारण देते हैं। वो कहते हैं मतलब डिफरेंसेस हैं ये एक तरह से। तो कहते हैं दैट एक्सपीरियंसेस 70s जैसी हैं, लेकिन आज का जो ऑयल प्राइस इंक्रीज है वो प्रोपोर्शनली स्मॉलर है कंपेयर्ड टू 70s। अगर 70s से कंपेयर करें तो उस वक्त ऑयल प्राइस में इन्फ्लेशन 15%, 20%, 50%, 80% ऐसे होने लग गया था, आज वो कम है। सेकेंड, उन्होंने कहा दैट प्राइस राइज इन द रीसेंट टाइम्स हैव बीन ऑन ब्रॉडर रेंज, स्टील प्राइस राइजिंग and aluminum price rising, wheat price rising, edible oil price rising, along with that oil price rising. But in 1970s, a majority of price increase was due to oil price rising. Then in 1970s, the commodity price disruption, okay, let me discuss this with you first. So central banks are more informed today and have clearer vision on future in the course of action than of 70s, because of well established exchange rate regime. आप में से जिन लोगों को इंफॉर्मेशन है वो उनको पता चल जाएगा
और जिनको नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ, 1972 तक हम लोग फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम फॉलो करते थे दुनिया भर में, और 1972 में वो ब्रेक होकर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पे चला गया। तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट कर रहे थे, सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसीज कोऑर्डिनेटेड नहीं होती थी, कोई एक्सपेंशन कर रहा है तो कोई कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। इस बार एक्सचेंज रेट सारे फ्लोटिंग हैं और सेंट्रल बैंक्स आपस में कोऑर्डिनेटेड थे बेटर, तो उससे भी कंट्रोल हुआ इन्फ्लेशन का काफ़ी हद तक। कुछ और फर्क भी है। चौथा पॉइंट आप ले सकते हो दैट इन 1970s inflation had been rising from time period in the past, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ना 1966-67 से ही शुरू हो गया था, बट recent inflation is after 7 to 8 years of low inflation। दुनिया भर में अगर तुम पिछले 7-8 साल का डेटा देखो 2015 के बाद, सो आफ्टर 2015, 14-15 till 2021-22 inflation was quite moderate and then it picked up, but in 1970s inflation had been rising year on year and continuously rising year on year, so that has also been a factor, you know, compared to those years. Also, you know, in 1970s, supply chain disruption was worse. Supply chains are better managed today, as the survey says. So, another point you can write is 1970s, supply chains not well established. Don't forget, वो ज़माना सोवियत यूनियन और अमेरिका के क्लैश का था, तो डर के मारे लोग फैक्ट्री लगाते ही नहीं थे किसी और देश में कि ये देश ओवरनाइट कम्युनिस्ट देश हो जाएगा, कंपनी नेशनलाइज हो जाएगी, सारे पैसे डूब जाएंगे, लोग लगाते ही नहीं थे अपनी फैक्ट्री दूसरे देश में, अब एमएनसीज। बट 1991 के बाद से ग्लोबलाइजेशन हुआ, सप्लाई चेन इस्टेब्लिश हुए, जगह जगह पे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स डेवलप हुए। तो इस साल कोविड पैंडेमिक ने सप्लाई चेन को डिसरप्ट किया, बट 1970s की तरह अनप्रिपेयर्ड नहीं था सप्लाई चेन, बेटर डेवलप्ड था, तो प्राइसेस बढ़े लेकिन उतने नहीं बढ़े। सो रीसेंट सप्लाई चेन बेटर इस्टेब्लिश्ड, हाई कॉस्ट प्रोडक्शन की जगह ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट हैड कम डाउन। 1970s, the production cost was very high because we did not have multinationals spread all over. We did not have the low cost producer or the lowest cost producer supplying it to the world. All this has changed after 1990, and this had an impact this year in controlling inflation to a great extent. Also remember, higher energy prices will matter less today as compared in the past. Again, survey says that is because global central banks are well conditioned, but more importantly, the world is shifting to renewable energy. People have learned how to conserve energy and so on. So energy prices are important, but compared to 70s, they are relatively less important. ये जो बॉक्स है, ये आप में से जिन लोगों के इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी ऐसे ऑप्शनल हैं, उनके लिए रेलेवेंट है बहुत ज़्यादा. Then comes the point that housing prices are recovering. This is a lesser important point. मैंने facts तुम्हें दे दिए हैं कि out of 50 cities, HPI market price index saw increase in 43 cities and decline in 7. इसमें एक बात का ध्यान रखना बस, that there has been National Housing Board support to housing finance sector. You know, support by National Housing Board to housing finance sector. एक ये पॉइंट हमें अपने दिमाग में रखना है. इसके लिए 3-4 स्टेप्स लिए, 2-3 रादर स्टेप्स लिए. एक, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन फैसिलिटी स्कीम, लिक्विडिटी इन्फ्यूजन फैसिलिटी स्कीम, ये लॉन्च किया गया फ्रॉम 2019, जिसके थ्रू नेशनल हाउसिंग बोर्ड, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, उनमें पैसा लगा देते थे और उससे 3 साल 4 साल के लिए अच्छे पैसे इनको मिलते थे और हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को इसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता था. साथ में जब कोविड-19 आया तो स्पेशल रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की गई. स्पेशल रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी
in COVID-19 2020-21 with a budget of 10,000 crore rupees ताकि रियल एस्टेट में पैसे की कमी ना हो, फाइनेंसर्स को, डेवलपर्स को पैसे की कमी ना हो, तो इसीलिए ये स्पेशल रीफाइनेंस फैसिलिटी दिया गया 10,000 करोड़ का। और साथ में एक एडिशनल फैसिलिटी लाई गई, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। देयर वाज एन एडिशनल फैसिलिटी दैट वाज ब्रॉट इन which was special liquidity facility with amount of another 5,000 crore during COVID pandemic. Special liquidity facility ये easy loan के लिए था जो दिया जा सके उन बैंक्स को, उन कंपनीज को जो रियल एस्टेट में है। So special liquidity facility of 5,000 crore. Why were they given all this money? Because during COVID pandemic things were going bad, real estate was suffering badly. In fact, real estate was in trouble even before COVID pandemic. So government did not want them to run short of money, and therefore they were given this money from the side of the government for loans. They were refinancing. मतलब जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड है वो ये लोन अरेंज कर देगा ताकि आपकी लिक्विडिटी मेंटेन रहे। Also the amount of money that was given, you know, we have seen that there has been a special liquidity facility too which has been given, and already up to 3.3 lakh crore rupees worth of liquidity has been given in the market since its inception. If you look at economic survey, they say that in the last financial year, last 3 financial year itself, 84,000 crore rupees worth of liquidity has been given to the housing financing sector, and all this to make sure that companies don't go bust, the house buyers don't lose their money. So ये schemes थोड़े दिमाग में रखोगे। और तीसरी बात, 84,000 crore rupees disbursed का मतलब distributed to housing finance. तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव नेशनल हाउसिंग बोर्ड हैज़ एक्सटेंडेड अ कंसेशन ऑफ 25 to 30 basis points to refinance for women, rural areas, SC/STs, northeastern region, loans to third gender for housing system, you know. So that can be taken as your 4th point, that under आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव National Housing Board has given interest subvention of 0.25% to 0.3% to deprived sections and vulnerable population group, deprived sections and vulnerable population groups like women, like SC/ST, you know, like people in northeast and so on. अब ये क्यों लिखवाया मैंने तुम्हें? अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया अचानक, what are the schemes or what are the steps taken by the government to promote housing development in India or to revive real estate sector in India, then these 4 points will come handy for you. That steps taken by the government to promote housing development or develop real estate sectors in India. So उस केस में तुम आराम से ये answers कर पाओगे. And then it takes us to one more discussion that they have done, that is keeping a check on pharmaceutical price. तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग पॉलिसी आई थी 2012 में, रेगुलेशन ऑफ प्राइस ऑफ ड्रग्स इन द मार्केट किए गए, 119 फॉर्मुलेशंस आर ब्रॉट अंडर द लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स, एंड PM भारतीय जन औषधि परियोजना has been initiated to develop quality medicine at affordable price. In fact, the survey says that after they have been brought in, you know, the PM Jan Aushadhi Yojana, the price of commodities have come down by up to 25% to 30%. कि जब से ये जन औषधि योजना आए हैं, quality food is available from 25% to 30%. 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
SVC Bank is a very different thing, Abhay, and inability to create job is due to lack of structural reforms. Also, you know, when you say government are unable to avoid recession, you can't avoid recession by a business cycle. You will need to do structural reforms, develop Africa, develop South Asia, develop East Asia, create new infrastructure, develop technology, stop abusing in the name of race, stop fighting among each other. These are the causes of recession today. तुम देखो एक बार सप्लाई साइड से रिसेशन है, पैंडेमिक आ गया, तो रिसेशन के ये कारण है. ऐसा नहीं है कि रिसेशन का कारण 2008 के बाद से आज तक कहाँ रिसेशन आया, पैंडेमिक के वजह से आया. सो बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन क्रिएशन still the recession will happen if people speculate a lot in the financial market, if people print a lot of money and think that will create growth, if people avoid doing structural reforms, if people avoid developing underdeveloped regions of Africa and Asia, if people discriminate in the name of caste, race, class, religion. So, you know, all these things are causing the recession. इनको ठीक करें, global system वापस growth की तरफ. All right. And then of course, we talk about the generic medicine provided through affordable prices. So this is the idea. The survey concludes by saying that India's inflation management has been noteworthy and much better than many other countries, but still the shocks can happen. For example, China going into a sudden lockdown. For example, there is an inflationary attack due by another war kind of impact. For example, if there is a sudden crisis of health again. So these things still remain. But overall, till now, India has been able to manage its inflation much better compared to what the other countries have been able to do. With that, we will end the session today. I'll begin with a talk with you on the next chapter, that will be social sector, when I see you on Tuesday. अब हमारी अगली मुलाकात होगी मंगलवार को 4 बजे इसी वक्त इसी समय. Thank you. Have a great day. Bye bye.